So before disconnecting, I was explaining the system software and the application software. मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह विंडोज आप अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हो और हम लोग जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, लिनक्स भी यूज करते हैं, यूनिक्स भी यूज करते हैं। विंडोज से पहले हमारे पास डॉस हुआ करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप था। अभी आप कंप्यूटर में बेसिकली आपके पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, जिस तरह आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पेंट है और इस तरह की बहुत सारी चीजें। ये क्या होते हैं? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसमें आप काम करते हो। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्या करता है, वो इनको मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है अपना कोई फाइल वगैरह पे काम करना है तो आप वर्ड खोल लेते हो, उसके अंदर आप टाइपिंग करते जाते हो और काम करते जाते हो। अब वर्ड को तो आप वर्ड का क्या है, वो एक आइकन है जो कि आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, आपने क्लिक कर लिया और वो खुल गया। अभी इसके बैक पर क्या चल रहा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का काम हो रहा होता है और वो मैनेज कौन करता है, वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। बेसिकली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो तो आपके रैम पर नहीं पड़ा होता, वो होता है हार्ड डिस्क पर। तो जब आप क्लिक करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको उठाकर जो है उसके कुछ पार्ट्स को उठाकर रैम पर रख लेता है ताकि आप उसको के ऊपर काम कर सके। और फिर जैसे जैसे काम करते जाते हो और फिर आप जो है फॉर एग्जांपल उसको सेव करते जाते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वापस क्या करता जाता है, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन वगैरह है वो आपका कर रहे हो और वापस जो है उसकी को डिस्क के ऊपर कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर लेता है, जिसके बगैर जो है आप सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी। तो अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होते हैं। आप अपना टास्क जो परफॉर्म करते हो वो बेसिकली किसकी मदद से करते हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करते हो। आपने टाइपिंग करना है, आपने कोई तस्वीर बनाना है, आपने कोई सर्किट सिमुलेशन यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वापस मैनेज कौन करता है, उसको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स में ज़बानी बता देता हूँ, जिस तरह आपका पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हुआ, पेंट हुआ, और इसी तरह फॉर एग्जांपल सर्किट मेकर आप यूज करते हो और मेटलेब यूज करते हो, और इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि वो एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आप यूज कर रहे हो। तो इस टेबल में आपको डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं और उसके फंक्शंस भी नजर आ रहे हैं, जिसमें से कुछ आपने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं और बाकी आप लोगों के यूज में नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका एग्जांपल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, वर्ड परफेक्ट भी है, और इस तरह के और सॉफ्टवेयर भी है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो बेसिकली ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये किसके लिए होते हैं, प्रिपेयर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स, इसके लिए होते हैं। ड्राइंग के लिए आपके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे जो उसका एग्जांपल दिया हुआ है वो कोलड्रा दिया हुआ है और कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स में मैं आपको पेंट का एग्जांपल दूंगा, पेंट में भी आप ड्राइंग कर सकते हो। इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें से आखिरी एग्जांपल की तरफ अगर आप चले तो सर्किट सिमुलेशन के लिए आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, और उसका एक एग्जांपल जो मल्टी सिम है, डॉक्टर सोहेल जो है वो यूज करवाती है स्टूडेंट्स को। इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच यूज करवाता था, डिजिटल सर्किट सिमुलेटर जो है मैं यूज करवाता था। तो ये भी क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वी कम टू द sequence of operation, that when you start a computer, what happens, that that is the sequence of the operation or sequence of operations.
When you first turn on your computer, this is what happens. Number one, BIOS from ROM is loaded into RAM, and a self-test is performed to check all major components and memory. Also, the BIOS provides information about storage, boot sequence, and similar operations. So in very first step, when you turn on your computer, some part of the BIOS loads inside the RAM because the central processing unit directly take data from the RAM. So some part of the ROM BIOS is loaded into the RAM. And then it performs what? Then it performs the self-test operations. For example, you test the different devices or different components attached with your computer, that hard disk is working or not, that different types of sensors are working or not, your keyboard is working or not, your monitor is working or not. The computer performs the self-test operation. And if something is wrong over there, then it gives you a message that something is wrong over there. Like for example, a message comes that your mouse is not connected, your keyboard is not connected, your this thing is not working, that thing is not working. That results in the self-test operation. And the BIOS also gives the boot sequence. It gives the sequence that first to do what, next to do what, and next to do what. Step number 2, the operating system on the hard disk is loaded into the RAM. So you see in the very first step, the BIOS is loaded into the RAM, because without RAM, the microprocessor cannot do work. But when you switch off your computer RAM lose its data. So this is ROM which retain its data. So inside the ROM, you keep the BIOS program, and when you switch on computer, the BIOS program sends to the RAM. Again, be remember, this job is also performed by the ROM. So loading program from ROM to RAM is also performed by the BIOS, and this program is also run by the ROM. And when the ROM BIOS is loaded into the RAM, then computer performs on its routine. Now, in the next step, what does it do? Suppose then that it performed the test operation, it load program from the BIOS inside the RAM. Then next step would be to load some components of the operating system inside the RAM. And now you know what is operating system. So some components of the operating system is loaded on the RAM, because the microprocessor do its direct communication with the RAM, not with the hard disk. The operating system, we keep the operating system inside the hard disk, but when the microprocessor works, it takes data from the RAM, not from the hard disk directly. So those components of the operating system which are being used are loaded onto the RAM. In third step, the application programs such as your Microsoft Word or something else are stored on the hard disk. When you select one, it is located or loaded into the RAM. Sometimes only portion are loaded as needed. Now, you know that operating system is on the hard disk. In step number 2, you loaded some portions of the operating system into the RAM, and then that operating system works. Like for example, your window starts working now. Now, if your window is working now, so what you do, you select, for example, you move your mouse to run any application software. For example, you are opening any file for the
Microsoft Word. And when you click it, what happens? Basically, that application software would be on the hard disk, and some part of this are completely this would be loaded onto the RAM, because the microprocessor directly communicate with the RAM. And when you click any application software icon, then the operating system load that application software in the RAM, and then you do work on this. Step number 4, files required by the application software are loaded from the hard disk into the RAM. Now, few files which needs to help the application software will also be loaded onto the RAM. Step number 5, when a file is saved and the application is closed, the file is written back to the hard disk, and both the application and the file are removed from the RAM. For example, you open the Word and you just wrote some letter inside the Word, Microsoft Word. So Microsoft Word is application software, and you wrote some data inside what? Inside that application software. You make a file over there. Now that file will also be saved on the hard disk. So the operating system do what? It take your file and save it on the hard disk. And now you close the Word. It means that operating system will also close your application. How does it close it? It removes its data from the RAM. RAM is small memory. So when you close any application software, the operating system remove it from the RAM so that the RAM would be used for other purposes. So those are the basic steps. When you switch on your computer, then how does it work and how you work on the application software. I hope this is clear.